So in today's lecture, we will start Indian economy. If you look at the OCS syllabus, you will find Indian economy plays an important role in both your prelim and main. Prelims में out of 100 questions in GS1, the range of economics or Indian economy question varies from 8 to 14, 15, sometimes goes around 15 plus also. But it is not constant, it varies. And if you look at the main syllabus, you will find Indian economy is in GS paper 3, along with other subjects like your science and tech, then ecology, disaster management, fine, agriculture, economy is also present. And in mains GS3, economy questions is always 80 plus out of 250. Normally it is 100 out of 250 marks, 100 marks in mains. So now you can imagine the necessity of Indian economy to clear both prelims as well as mains. If you have 8 question, it is around 16 marks. If you have it is 28. So cut off kebe 48, kebe 78. This time might be higher, 690. So 8 to 48 ho, 78 ho, 90 ho. If you economics 20 marks, then the path to clear in prelim will be much easier. Both easy is you 20 mark The syllabus is concise, details of the syllabus kete padhiyar achi, koda padhiyar achi. We will look at the syllabus and then we will complete the prelim syllabus first, then we will move to mains. So before starting the discussion about the syllabus, let's understand the Indian economy and economics in general. You need to remember that in OCS exam, we need to study Indian economy. हमको economics पढ़िबार नहीं, हमको Indian economy पढ़िबार अछि. जेतला हम Indian economy कहि जाउछुंदी, that means we have a defined syllabus. बहुत ही concise और defined syllabus अछि Indian economy but economics is a vast subject. Okay, and it is not useful for us. हमको जति दरकार, that is Indian economy हम ताको complete करिया. So let's discuss about what do you mean by economics? Economics as a part of science or as a part of commerce, accounting, economics kahin start hela, and what is the role in administration or civil service? हमें civil service से Indian economy kahin पढ़िबा? Mainly the role of administrator. Administrator काम कौन mainly to administrate the region, BDO, Tahsildar, district magistrate. तां काम mainly कौन? To maintain the law and order, to formulate the policy, to implement the policy, evaluate the policy. So एठी Indian economy रो role कोठी आसीबा? That is our second question, and first question is to understand economics. Economics कौन? Economics काहे के असला? केमनी development economics हला? To understand economics, let's discuss it with a example. But example से हमें बुझिबा
केमिति Indian or the economics was started. देखो, consider a situation in which there are 1,000 bikes and there are 100 people in a city. ठीक, 100टा बाइक्स अच्छी गोटे कंपनी बाइक, सेम कंपनी सेम ब्रांड, डोंट कॉम्प्लिकेट द क्वेश्चन, बुझे चेष्टा करो. 100टा बाइक अच्छी, सॉरी 1,000 बाइक, 100 पीपल्स आर देयर टू, दे वांट बाइक. ए जो 1,000टा बाइक अच्छी दैट इज विथ 10 एजेंट्स. लेट एजेंट आर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे. 10 जन एजेंट समस्त पाखे 100टा लेखा बाइक अच्छी. ओके, लोक के जन अच्छी 100, बाइक केते अच्छी 1000, माने लोक जी डिमांड अच्छी ताठू मार्केट सप्लाई अधिक अच्छी. तो लोक क्या किनबे, लोक or the people will compare the price. Let's suppose the agent A is selling the price at 1 lakh rupees, B 1.5 lakh रे दूची, C 80,000 रे दूची, D 90,000, E 95. Similarly F केते दूची, F 1.5 lakh रे, G 1.1 lakh, H 60,000, I 1.5 lakh और J 1.7 lakh. समान बाइक, समान क्वालिटी, बट दे आर सेलिंग इट एट डिफरेंट प्राइस. तो तुम चिंता करो कहार अधिक बिक्री हम. ऑब्वियसली पीपल विल गो टू द एजेंट एच. कहीं समान क्वालिटी प्रोडक्ट को सी सब कम रेट दूसरी, तो पीपल विल सी कि आम कम रेट किनवा आम पाखे अधिक पैसा रही. इकोनॉमिक्स बहुत सारा कॉन्सेप्ट यूज है, गोटे कॉन्सेप्ट खाली यूज करागला, दैट इज जे सस्ता दब तार जिन बिक्री हो. बिकॉज इन दिस सिचुएशन द सप्लाई इज हायर and the demand is lower, but this situation happens in rare condition. बहुत ही एमती रेयर कंडीशन आसो जो लोक रिक्वायरमेंट टू सप्लाई अधिक हो जाए. बट नाउ रिवर्स द सिचुएशन. चिंता करो 100टा बाइक अच्छी आउ 1000 जन लोक अच्छा, समस्त बाइक दरकार, सेम एजेंट समस्त पाखे अच्छी, 10टा लेखा बाइक अच्छी. ठीक, 10टा लेखा बाइक अच्छी. समस्त 10टा लेखा बाइक अच्छी, समस्ते सब एजेंट 10 धरी बही, डिमांड मार्केट रे अच्छी. ठीक, 1000 लोक 1000 जन को बाइक दरकार, मार्केट अच्छी 100टा बाइक. तो यही कंडीशन में कौन हम, जी सब सस्ता दब लोक ताठू फास्ट किनबे. बट एटा तो सरीगला, ताठू जी माने टिके अधिक रेट थी लोक ता पाखु जिबे, तापरे नेक्स्ट लोक पाखु जिबे. बट एटा हम कौन शिखिले कि जितेबाला रिसोर्स क्रंच हो, जितेबाला डिमांड आउ सप्लाई भितर मिसमैच हम आ सप्लाई डिमांड टू कम रहिबो, सेतबेले लोक कौन करिवे, लोक बाय करिवे विथ हायर प्राइसेस. लोक किनिबे किंतु फास्ट जोड़ा चीप थो से किनबे, तापर नेक्स्ट लेवल को जिबे, तापर नेक्स्ट लेवल को जिबे, बिकॉज लोकों को बाइक दरकार बट सप्लाई एटी कम अच्छी. सिमिलरली इफ यू विल कंपेयर द इंडियन सिनेरियो, we have 1.4 billion people and we have very limited resource. आम पाखे सब किसी रिसोर्स लिमिटेड अच्छी. We have limited resource of mines, we have limited resource of forest, we have limited resource of water.
We have limited resource of skilled manpower. सब किसी हमारा limited अछि. Now it becomes the challenge for government to fulfill the aspiration of 1.4 billion people with this limited resource. जितेबाला रिसोर्स कम हो गला लोकंर एस्पिरेशन की डिमांड बढ़ी गला सेतबेले हमको रिसोर्स को प्लान करके खर्च करिया पड़िबो. वी नीड टू प्लान इट प्रॉपर्ली बिफोर वी स्पेंड. गोटे जगह तमे लेट्स सपोज कंसीडर करो यू आर इन ओके तमे सहारा रे अछ सहारा डेजर्ट रे तमे अछ तुमको सोच लागुच सेठी वाटर बोतल ला दाम होची लेट्स सपोज वाटर बोतल दाम होची 1 लाख रुपीस 1 लीटर पे आउ डायमंड होची 50,000 तुम पाखर अच्छी एबे लेट्स सपोज तुम पाखर अच्छी 1 लाख रुपीस तो तुम कौन ये डायमंड किणव कि 50,000 देकी किणव ना तुमको जब जीवन बचार अच्छी तुमको पानी पीवा पड़ो. तो सिमिलरली डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट जिनसर वैल्यू भी चेंज हो. बट समान जिनस जदि भुवनेश्वर बिक्री हम वाटर लिटर 1 लाख डायमंड 50,000 तो लोक डायमंड नहीं किणवे ना जिनस तो समान थिला. बट कौन है डेजर्ट रे पानी लिमिटेड डेजर्ट रे पानी लिमिटेड बट भुवनेश्वर रे अनलिमिटेड नुहे पानी बट देयर इज adequate amount of water is available. तो ये जेहेतु adequate amount of water available अच्छी people will buy diamond instead of water. बुझी पार्छ कॉन्टेक्स्ट अनुसार केमती चेंज होची. सिमिलरली जेहेतु हम पाखर लिमिटेड रिसोर्स अच्छी आउ 1.4 बिलियन पीपल कर डिमांड अच्छी एस्पिरेशन अच्छी वी नीड टू प्लान द स्पेंडिंग. गवर्नमेंट को प्लान करके स्पेंड करिया को पड़िबो. कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन बुझी पालो जेतबेले रिसोर्स स्कार्स थिबो ठीक अछि इकोनॉमिक्स केतबेले आसीबो. इकोनॉमिक्स विल कम इन द पिक्चर व्हेन देयर इज रिसोर्स जेतबेले कोन थिबो स्कार्स थिबो माने कम ही थिबो डिमांड टू रिसोर्स कम अच्छी. आमे छत्तीसगढ़ आउ ओडिशा भितर ठीक छत्तीसगढ़ ओडिशा भितर महानदी वाटर को लेकिन क्राइसिस चलछि. महानदी वाटर को लेकिन नॉट क्राइसिस डिस्प्यूट चलछि. यदि छत्तीसगढ़ पाखरे भी एडेक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर थांदा ओडिशा पाखरे भी एडेक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर थांदा ताले कोन थांदा देयर विल बी नो डिस्प्यूट. आमे भी तान कहता ठीक तुम पानी रखि दियो ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି ନାଇଁ ତମେ ଆମେ ତମକୁ ପାଣି ଛାଡିଦେବୁ ତମେ ରଖ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ. ବଟ୍ ଏବେ କଣ ହଉଛି वाटर इज स्कार्स तांको भी दरकार आमको भी दरकार. टू सीजन जेतबेले रेन सीजन चली ठीक अच्छे रेनी सीजन चलती सेतबेले वाटर स्कार्सिटी न तबे वाटर रो एक्सेस हो जाउछ. जेतबेले एक्सेस वाटर हो जाउछ छत्तीसगढ़ कहछि कि ओडिशा को कि तमे वाटर यूज कर आम छाड़ देलु. जेतबेले समर सीजन आछि लीन सीजन आछि सेतबेले कोन होछि सेतबेले ता पाखर वाटर क्राइसिस होछि तो से कोन करछि बैरेज वगैरह बनै कि वाटर को स्टोर करी सेट रखछन्ती दे आर नॉट गिविंग टू ओडिशा. बुझि पाला जेतबेले रिसोर्स कमी आसीबो सेतबेले इकोनॉमिक्स आसीबो. जेतबेले रिसोर्स कमी नथिबो सेतबेले इकोनॉमिक्स रो कांसेप्ट काम करियो नेटी सब खुशी ठीक ओडिशा भी दे दोछि छत्तीसगढ़ भी दे दोछि. बट जेहेतु आम पाखर रिसोर्स कमी अछि वाटर रिसोर्स तांगा पाखर रिसोर्स कमी अछि then there is a dispute and that is the biggest challenge for any government in India to fulfill the aspiration of people with the limited resource. जेतबेले प्लानिंग करा जिवो सेही रिसोर्स को यूटिलाइज करिया पई in some places there will be some beneficiary there will be some people who will be out of that beneficiary list. किसी लोगों को बेनिफिट मिलिबो किसी लोगों को मिलिबोनी and that will also create another problem that also needs to be tackled by the government. So now we'll see
the role of economics, role of economy in Indian or in administration service. देखो एडमिनिस्ट्रेशन में काम कौन मेन नाम कहले लॉ एंड ऑर्डर, देन देयर इज प्रोग्राम प्लानिंग, प्रोग्राम implementation and evaluation. To secure the law and order of any city or any district, we need to ensure that कि लोकों पाखरे रिसोर्स जहाँ भी अच्छी ता निडी लोकों पाखरे ठीक ठाक टाइम पे पहुंच पाए. Government is running the PDS, public distribution system, जो फ्री राशन वगैरह दिया होची PDS शॉप्स कहीं दिया होची यदि ए PDS प्रोडक्ट थ्रू फ्री फूड ओके जोटा हमर राइस हो कि व्हीट हो यदि हम लोक न दवा ताल कोन हो देयर विल बी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम. जेतो लोकन बाहर खाइया न थियो ना दे कैन डू एनी रिस्की थिंग्स. भोक रही से किसी भी रिस्की बिहेवियर को नहीं जी क्या बाड़े क्या कौन करेंगे कुछ अटाक हो. So to maintain law and order, first thing is that government need to maintain law and order. For that the government need to use the resource wisely. PDS system केमती होगा फिर PDM system जो PDS system बनाला तापे फास्ट हमको फॉर्मुलेशन କରିବାକୁ पड़िबो. ठीक प्रोग्राम प्लानिंग और फॉर्मुलेशन आम देखिए कि केते आम पाखरे बेनिफिशियरी अच्छी. लेट सपोज एबे आम पाखरे 80 करोड़ बेनिफिशियरी अच्छी. 80 करोड़ लोक मिलছে ना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो अन्न योजना अच्छी जोटा कोरोना टाइम रे स्टार्ट हेतिला ता गुरु थिला हमरो फूड सिक्योरिटी एक्ट रे अराउंड 80 करोड़ पीपल आर द बेनिफिशियरी. 80 कोटी लोक दिया हो. तो जेतले प्रोग्राम प्लानिंग हबो देखा जिवो केते लोक बेनिफिशियरी एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट केते दरकार अच्छी एंड ऑल्सो व्हाट इज अवेलेबल रिसोर्स विथ द गवर्नमेंट. यदि गवर्नमेंट पाखे अवेलेबल रिसोर्स नथियो केमी दे दो जे रिसोर्स नथियो पैसा देके किनिया पड़िबो यदि प्रोग्राम चले अछि. तो ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम प्लानिंग फेज इकोनॉमी प्लेज ए ह्यूज रोल. आमे आगे कैलकुलेट करबा केते लोक अछंती केते जन बेनिफिशियरी अछंती. बेनिफिशियरी को आमे जहाँ भी बेनिफिट दबा तार कॉस्ट केते एंड हाउ टू अरेंज दैट. आमे पीडीएस से कहते हैं आमे ग्रेन्स ओके राइस व्हीट ये सब जो आम दबा ताको आम प्रोक्योर भी करिया पड़िबो ना. चासी टका किनि के नै पड़िबो तापर से आम दे परिबा. तो तांटू किनिया पे केते रेट रे आम किनिबा यदि आमे तांटू किनिबा से पैसाटा कोठी आसीबो. आमु जेतल बजेट आमे तैयारी करछन से बजेट रु ही ए पैसाटा बाहर करिया पड़िबो. यदि बजेट रु आमे किछि पैसा पीडीएस पे रखबे ताले हमकु से बजेट रो आइदर वी नीड टू एडजस्ट दैट मनी फ्रॉम अदर सेक्टर आउ कोनो सेक्टर रे ताको काटिया पड़िबो और एल्स वी नीड टू बोरो सम मनी. हमकु बाहर किछि पैसा बोरो करिक चले पड़िबो. सेकंड देखो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. जेतले आमे इम्प्लीमेंटेशन करिया प्रोग्राम फास्ट तो प्रोक्योर करिया पड़िबो. ठीक फास्ट हमकु कोन करिया पड़िबो वी नीड टू प्रोक्योर. हमको आगे किनिया पड़िबो तापरे ताको स्टोर करिया पड़िबो तापरे ताको डिस्ट्रीब्यूशन करिया पड़िबो. देन इट विल गो टू द पीडीएस तो तापरे कस्टमर जो माने आसी की और बेनिफिशियरी जो माने सेडु आसी की जिंस किनिबे. केते केते काम रहलन देखो प्रोक्योरमेंट कोड कोड धान किनिबा को चासी पाखर किनिबा को मंडी रु किनिबा केते रेट रे किनिबा. देन कोड ताको स्टोर करिया प्राइवेट स्टोरेज स्टोर करिया कि गवर्नमेंट रो स्टोर हाउस स्टोर करिया. whether there is adequate capacity to store the procured rice or wheat. आम पाखरे adequate amount of storage अच्छी कि यदि नहीं then we may create or build new storehouse
नुआ स्टोरेज तैयारी करिवा नले प्राइवेट जार स्टोरेज अछि ताको पैसा देके हम यूज करिवा तापर तुम कोन रहला डिस्ट्रीब्यूशन पंजाब रु आ हरियाणा रु मैक्सिमम प्रोक्योरमेंट होची एट द रेट ऑफ एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से अराउंड टोटल 6% फार्मर ही बिकी परसेंट आ मैक्सिमम इज फ्रॉम पंजाब हरियाणा सेठी तो हम प्रोक्योरमेंट कर देले ताको डिस्ट्रीब्यूशन भी करिया पड़ियो ना न ओडिसा रे पीडीएस केम चलियो तो ताको स्टोर कला परे अगेन वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट ताको ओडिसा को पठेबा छत्तीसगढ़ को पठेबा बिहार को पठेबा यूपी को पठेबा कर्नाटक को पठेबा तमिलनाडु को पठेबा सब काम पठेबा पड़ियो एसो नो देन पीडीएस जदि हमर 80 कोटी लोक अछंती चिंता कर हमर पीडीएस केते हितो केतेटा पीडीएस गवर्नमेंट रन कर गोटे पीडीएस को कौन सामान जीव से पीडीएस से केते लोक और केते बेनिफिशियरी एनरोल अछंती तांको रिक्वायरमेंट कोन केते हम देई परिबा देन द कस्टमर तांको भी तो डाटा रखिया पड़ियो ना वन नेशन वन राशन कार्ड आगुर कौन होतला जे तुम ओडिसा लोक केवल तुम ओडिसा रु राशन उठी पारतलो बट ओडिसा लोक माइग्रेटेड टू गुजरात सूरत को पळै कि सेठी काम करछंती दे कैन टेक देयर राशन फ्रॉम सूरत सेठी का जो पीडीएस थिबो सेठी जाके माने नहीं परिबे बिकॉज़ ऑफ दिस वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम वन नेशन वन राशन ठीक तो तांकर हमकु 80 कोटी लोक माने यू कैन इमेजिन कि 20 करोड़ पाखापाखि फैमिली कार्ड थी 20 कोटी कार्ड ताको हम मैनेज करिया अछि डिस्ट्रीब्यूट करिया अछि ताको मेंटेन करिया अछि केमिति यूज करा होछि ताको हम देखिया पड़ियो एवरीथिंग नीड्स ए सिस्टम टू हैंडल एंड देन इवैल्यूएशन हमें जो 80 कोटी लोगों को खाइबा को देले गवर्नमेंट जहाँ भी सिस्टम रे देला whether 80 कोटी लोग पाइले that is the biggest question otherwise the whole program planning is a failure हमें जो माने इंटेंडेड बेनिफिशियरी जे तांका पाखर हमें पहुंची पारनांती तांको जदी हमें जहाँ भी हमें प्रोग्राम करथिले कि फूड ग्रेन की किछि भी पहुंचेबा जदी हम देई पारना दैट इज द बिगेस्ट फेल्युअर तो हमको इवैल्यूएट करिया पड़िबो कि 80 कोटी लोगों पे हमें फूड ग्रेन पठैथिले ओके 80 और 80 करोड़ लोगों को पठैथिले लेट्स सपोज 77 करोड़ को मिलला बाकी 3 करोड़ कौन सी कारण तक मिलला इट्स ओके ओके 3 कोटी मिलला ने ओके मैनेजेबल हम देखिया काहे की मिलला ने व्हाट आर द कॉजेस कॉजेस कौन थिला ना तांक बार कार्ड नहीं कार्ड हो जाईती दे आर अनअवेलेबल ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड कि तांकर किछि अलग कारण थिला से माने नहीं पाले ने सो दैट्स ओके वी नीड टू फाइंड आउट द कॉजेस एंड ए कॉजेस को करेक्शन करिया पे विल टेक सम मेजर करेक्शन मेजर्स विल बी टेकन सो दैट 80 करोड़ जो इंटरनेट बेनिफिशियरी अछन समस्त पाखरे बेनिफिट पहुंचबो दैट इज द रोल ऑफ इकोनॉमिक्स starting from the planning starting from the law and order then the implementation evaluation everything everywhere there is the role of Indian economy without Indian economy there will be no program planning there will be no law and order situation can be maintained lavishly जदि खर्च करिवो तल केमि हेइपरिवो रिसोर्स क्रंच अछि ना बाहर रिसोर्स हम कहउछन स्कार्स रिसोर्स हम बाहर कम अछि जदि हमर बहुत अछि तो तुम खर्च कर दियो नो डाउट असुविधा नहीं जे तमर स्कार्स अछि लोकंकर डिमांड अधिक अछि वी नीड टू spend or we need to manage the resource in wisely so that जो माने बेनिफिशियरी अछंती समस्त पाखरे adequate amount रो रिसोर्स पहुंच परिए okay so that is the role of Indian economy now as you know the role of Indian economy you know the importance of Indian economy in your civil service preparation we will now discuss about the syllabus first हमें prelims का syllabus देखिए and after that we will move to mains मन रखियो prelims syllabus and main syllabus are different आगुरु माने केते 2-3 years back जेतबले
माने दीटा जीएस सॉरी दीटा ऑप्शनल था सेतबेले ऑलमोस्ट देयर आर सेम बट तुम प्रीलिम्स पेपर पढ़ी कि मेंस को जीवो फेल हे जीवो मेंस पेपर पढ़ी कि प्रीलिम्स को जीवो फेल हे जीवो मन रखियो बोथ आर डिफरेंट बट प्रीलिम्स कांसेप्ट जानिया बिना तुम मेंस से आंसर लिख परिबनी किमा मेंस रो सिलेबस को तुम बुझी परिबनी प्रीलिम्स विल build up the foundation on which you will read the main syllabus but interchangeably तुम पढ़ले तुम फेल हे एटा मन रखियो राइट so what is the timeline आज हला 15 मार्च 15 मार्च and by second week of May we will complete both the prelims and main syllabus prelims सरला पर तुम prelims माने रिवीजन करिवो मेंस चलथिवो जेतल तुम prelims सर दियो तापर मेंस पे रिवीजन स्टार्ट करिवो now your task is to attend all the classes सब क्लास को तुमको अटेंड करे अछि and along with this you need to revise the concept यदि हमें बुझिबानी then it will create problem Indian economy रे बहुत सारा concept अछि that you need to understand एटा नो फाउंडेशन बनेबो सेतरे तमे भलो मार्क रख करियो मेंस से भी विदाउट फाउंडेशन जेमति घर स्ट्रांग होएनी so without the foundation knowledge of Indian economy in prelim means aba बहुत कष्ट okay so we'll see the syllabus देखो कौन syllabus first is characteristic of Indian economy रो characteristic कौन अछि we will also see कि चाइना रे कौन अछि चाइना हमर नियरेस्ट कंपटीटर थिला ना एबे तो China is becoming superpower. So we will compare the India तार neighbor से powerful तासे तामे compare करिया. So we will study in details the characteristics of Indian economy. कौन तार lacuna अछि केमिति ताको हम manage करचंती everything will comes under this characteristic part then national income accounting आगुरटा गोटे बहुत सारा माने ओपीएससी रो गोटे फेवरेट स्पॉट थिला ए तो पचार थिला नेशनल इनकम कैलकुलेट किए करे व्हाट इज द फार्मूला ठीक एबे टिके चेंज हे गेलन सिलेबस माने एबे टिके लेवल चेंज हे गेलन ओपीएससी रो दे आर आस्किंग क्वेश्चन लाइक यूपीएससी व्हिच इज अ गुड साइन सेति में हमको प्रिपेयर होबा को पड़िबो बलरे पढ़िया को पड़िबो द third thing is inflation. We will see the definition of inflation. Inflation no definition कौन? कहाँ को inflation कहबा? What is inflation? What is disinflation? What is deflation? ये सब हम पढ़िबा. Then the impact of inflation, whether it is good or whether it is bad. Inflation नो भी UPSC रो ये भी UPSC रो गोटे 4 मार्क क्वेश्चन बहुत फेवरेट पचार दो से इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट को लेके क्वेश्चन तैयारी करियो पचारे बहुत पचार माने एथरे भी पचारिबो चांसेस आर हाई ओपीएससी जहां पचारे से रिपीट करे से थीम को यदि तमे डाउट रखो कि वेदर इट रिपीट्स और नॉट तुम क्वेश्चन देखियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम जानि दियो कि ओपीएससी त थीम को बहुत सारा रिपीट करे एग्जैक्ट क्वेश्चन आसबो बट थीम रे आसबो inflation unemployment ये गोटे बहुत important theme for the OPSC then growth and development what is growth what is development whether growth is equal to development हम कोन कोइ परिबा कि growth और development समान बोली दोनों को growth होची सेटा कोन development से समान what is the characteristic of growth what is the characteristic of development can there will be negative development negative development हे परिबो कि परिबो negative growth obviously negative growth but there will be no negative development how the growth is becoming development केवल growth development no growth plus the social change plus the social progress ये सब मिसला पर तुम development होबो and how they are interrelated how the growth becomes the primary factor for the development एटा हमें
डिस्कशन करबा आउ पढ़िबा देन प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग कमिशन नीति आयोग एटा स्टार मार्क करके नहीं जाओ 2023 पर्यंत बोधे प्रति वर्ष ए गोटे क्वेश्चन आसला जो 5 ईयर प्लानिंग अच्छे ना 5 ईयर प्लान रु गोटे क्वेश्चन पचार आउ ता सहित नीति आयोग जो आसला इट रिप्लेस द नेशनल डेवलपमेंट जो नेशनल प्लानिंग कमिशन जोड़ा आम हटे नीति आयोग आनले बिकॉज नेशनल प्लानिंग कमिशन वाज डूइंग द वर्क फॉर व्हिच इट इज नॉट डेवलप्ड जो तैयारी कराइला छाड़ी बाकी अलग काम करता लोक मान फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट को हार्म होता स्टेट मानकर किसी कहबार अधिकार नाला फॉर दैट रीजन वी ब्रिंग नीति आयोग तो हमें 5 ईयर प्लानिंग कमिशन केबे प्लानिंग स्टार्ट है इंडिया रे प्री इंडिपेंडेंस टाइम केमती हमर प्लानिंग थिला तापर केमती धीरे धीरे हमर प्लानिंग चेंज हला एलपीजी एरा जो आसला 1990 रे तार इंपैक्ट कोन रहिला अलोंग विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ नीति आयोग केबे फॉर्म हला तार काम कोन तार को माने नीति आयोग रो मेंबर ए सब हमें पढ़िबा इन दिस चैप्टर 5 दैट इज प्लानिंग ऑफ इकोनॉमिक्स देन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी देखो जो जिनस गुड़ा आरबीआई जो स्टेप्स नब टू कंट्रोल इन्फ्लेशन मन रखिबो आरबीआई जो स्टेप्स नब दैट विल कम अंडर योर मॉनेटरी पॉलिसी जेमिति अछि सीआरआर 6 सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो एसएलआर रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट ये सब तुम आस मॉनेटरी पॉलिसी ठीक ये सब आस तुम मॉनेटरी पॉलिसी देन व्हाट इज फिस्कल जोटा गवर्नमेंट जो स्टेप्स नब दैट विल कम अंडर योर फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट जो स्टेप्स नब टू कंट्रोल इन्फ्लेशन कोडी कि जदि लोक मान पारे काम नाही हमरो इकोनॉमिक रो ग्रोथ कमी जाय छै गवर्नमेंट अधिक स्पेंड करिवो कोटी हाईवे बनेबो कोटी लोक मान को एमजी नरेगा काम दबो एमजी नरेगा नाही दैट इज नाउ बीबीजी रामजी तो ये सब आसो तुम गवर्नमेंट रो जहाँ भी माने रूल्स रहबो दैट विल कम अंडर दिस फिस्कल पॉलिसी हम देखिबा कि आरबीआई हाउ कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन को आरबीआई केमिति हमरो कंट्रोल करछि व्हाट इज द टारगेट इन्फ्लेशन टारगेट होछि 2 ରୁ 6% भितर मिनिमम 2 मैक्सिमम 6 और इन्फ्लेशन न होबा इज आल्सो नेगेटिव साइन फॉर द इकोनॉमी इन्फ्लेशन होबा जरूरी तो इन्फ्लेशन को हमको कंट्रोल रखिया पड़िबो हाउ द आरबीआई इज कंट्रोलिंग इट देन मनी एंड बैंकिंग जस्ट 1 मिनट in money and banking हमें देखिबा how the concept of money started जेतले ब्रिटिश लोक इंडिया को आसिले सेतले सेमान कॉइन मिंट कले ठीक बॉम्बे रे गोटे तांकर मिंटिंग प्रेस थिला ओके जोट से माने कॉइन को कॉइन मिंट कले ठीक प्रिंटिंग प्रेस आसबो नोट्स नहीं नोट्स में तुम्हारा प्रिंटिंग प्रेस मिंट कौन कोटा हम कॉइन मिंट ओके आगुरु मुगल माने किछि करथले कनिष्क गोल्ड कॉइन किछि करथले एतो तो ओपीएससी गोटे क्वेश्चन आथला ना प्रीलिम्स पे पचारथले कि फर्स्ट कॉइन गोल्ड कॉइन जो निशांक ताको के मिंट करथले एतो क्वेश्चन आथला ना कंट्रोवर्शियल and for people are divided into 2 parts but OPSC ja dobo answer ki that will be the final ठीक तो मनी केमिति स्टार्ट हला कोड मनी कांसेप्ट आसला आगे कोड स्टार्ट हला आगे इंडिया आगे कोडी चलथिला ठीक है कोडी जो कोन नहीं समुद्र कलेक्ट करा जाए एटा को एक्सचेंज
रूप रे यूज करा होतला कि तुमरे माने 5 किले माछ दे दे 5टा कोड ले जा कागज कोन थला बाटर सिस्टम बाटर तू मते 2 केजी राइस दे मु तते 100 ग्राम रो गोल्ड दूच अफीम was the system of money during माने यूएस रे अफीम को तांगर यूज करा जे मीडियम ऑफ एक्सचेंज कोड कोडी व्हेल टीथ को यूज करते व्हेल टीथ माने एमिति जिंस यूज करा जाय जोटा रो रेयर थी जोटा ठीक तो कोडी आसला कोन बाटर सिस्टम जेमती तू मते दिखले आंब दे मु तते किले चाउल दउ बट से दिखले आंब दउ राजी अछि से दबो किंतु ताको चाउल दरकार नहीं ताको दरकार गहम ये लोग कोन करी आपात चाउल अछि जोटी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस हबनी से जाय बाटर सिस्टम काम करबनी तुम गलो मार्केट को 40 टका नहीं ठीक 40 टका नहीं घर गलो मोमोज खाया पे तुम देखलो मोमोज वाला कोन कोइ घुगुनी बिक ठीक अछि मटर करी बिक तुम खाइबनी खाइबनी पळे आसीबो आ गो दुकान को जीवो कारण तुम जा चाहूछो तुमको मिलला नहीं तुमको जब तुम जिनस मिली था तुम 40 टका देथन आ दुकान 40 टका ही चाहूला सिमिलरली जेतोले डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस हबो माने मु जा चाहूची आउ जन थारु ठीक दि जन पर्सन अछंती ए आ बी ए चाहूची राइस बी चाहूची मैंगो आउ दे आर एग्री टू एक्सचेंज इट विथ वन अनदर जने राइस देकी मैंगो नहीं आसी बट जेतोले लोक को राइस दरकार बट ताको मैंगो ही दरकार नहीं तो से जगह कौन हम से जगह बाटर काम कर तो आसला कोडी हला व्हेल टीथ हला तापर गोल्ड कॉइन हला ठीक मुगल टाइम रे किछि हेतला देन ब्रिटिश आसले से माने कॉइन मिंट कले तापर बैंकिंग सिस्टम आसला बहुत सारे बैंक धीरे धीरे डेवलप हेले नोट्स आसला तापर नोट्स पर कौन हला नोट्स माने वी आर टॉकिंग अबाउट पेपर करेंसी ठीक आसला मेटल मन सब मेटल मेटल माने जोटा तुम रहा कॉइन्स वगैरह ठीक कॉइन्स ऑफ मेटल्स तापर पेपर करेंसी पर प्लास्टिक प्लास्टिक आसला नहीं जोटा तुम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड तापर तुम है डिजिटल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जमती अच्छी तुम कौन से कहते डिजिटल करेंसी भूल जाता ना क्रिप्टो ठीक से सब कॉइन गुड़ा जोटा माने माइंड करा होची सब आम पढ़िया अंडर मनी एंड बैंकिंग देखिए को बैंक इंडिया रे स्टार्ट हेतला फास्ट पूरा गवर्नमेंट फास्ट माने इट इज फुल्ली ओन्ड बाय द इंडियन पीपल केबे पीएनबी बैंक स्टार्ट हेतला केबे कैनरा बैंक स्टार्ट हेतला मर्जर काहे की हला जो हमर अछि ना ज्ञान संगम 1 ज्ञान संगम 2 ए बैंकिंग सिस्टम सब आसीबो व्हाई वी आर मर्जिंग बैंक्स बैंक को काहे मर्ज करा छोटे छोटे बैंक को काहे की बड़ बैंक रे कन्वर्ट करा व्हाई वी आर क्रिएटिंग बैंक्स दैट कैन नॉट फेल माने एते तो बड़ बैंक होची एटा केबे फेल हेई भी करियोनी टू स्टेबलाइज द इंडियन इकोनॉमी तेतरा में ऑब्वियसली आरबीआई रो रोल भी हमें पढ़िबा आरबीआई रोल हमें एडी पढ़थिले ना मॉनेटरी पॉलिसी रे और बैंकिंग रे भी हमें देखिबा आरबीआई कोन काम करछि हाउ इट इज सुपरवाइजिंग आउ जेतरा हमरो इंटरनेशनल ओके इंटरनेशनल जते सब मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी ताकू हमें और हमें मीन्स आरबीआई हाउ इट इज इम्प्लीमेंटिंग इट ठीक है देन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट हियर वी विल स्टडी अबाउट द मनी मार्केट और कौन कहले कैपिटल मार्केट मीन्स जोटी रहला तुम शेयर डिबेंचर ठीक
how the shares are being traded, blue chip company कौन, what is the significance of bull, what is the significance of bear, what is the concept of, okay, got a concept अछि ना, the concept of bull, the concept of bear, okay, what a aggressive concept, केतबळे government or the RBI will behave in an aggressive mode, केतबळे soft money use करा जिवो, ये सब आसे तो कैपिटल मार्केट रे जो अपना आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये सब आसो कैपिटल मार्केट हम पढ़िया, मनी मार्केट जेतबळे एठू जिंसो ट्रांसफर हो जिवो सेकेंडरी मार्केट को पळे आसीबो, ओके, जेमिति हमें जोटा हमर अछि फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई जोटा हमें कहउछंती एफडीआई एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये सब आसबो मनी मार्केट कैपिटल मार्केट रे, क्वेश्चन आदरू ऑलरेडी ओपीएससी पचार सच, then we will study about budget taxation, article 112 budget, who is presenting it, budget के प्रेजेंट करछि, on whose behalf, budget के दिन पास करिया पड़िबो, budget यदि पास न होला ताले what will be the impact, budget सहित आउ को बिल हमें माने प्रेजेंट करंती, appropriation bill, finance bill, ये सब कौन, what is the difference, ठीक, appropriation bill, finance bill, what is taxation, ठीक, taxation कौन, who can impose tax, what is जिनसे मन रखियो, parliament can decrease the tax, parliament केबे tax बढ़ी परिबोनी, tax के बढ़ी परिबो, tax can be increased by the cabinet, tax पई कौन कौन हमरो एक्ट, आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, तापरे जीएसटी, तापरे एक्साइज, कस्टम, ठीक, ये सब टैक्स अछि, विल स्टडी जीएसटी केमति स्टार्ट होला, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ जीएसटी, जीएसटी was started with 2 aim, जीएसटी हम स्टार्ट करथले दीटा एम ने की स्टार्ट करथले, वन इज टू सिंप्लीफाई द टैक्स स्ट्रक्चर, को हमको सिंप्लीफाई कर देथिला, सहज कर देथिला, द्वितीय ऑब्जेक्टिव कौन थिला, देन द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी इज टू गिविंग बैक द बेनिफिट टू द कस्टमर, जो जिनसटा 100 कोटी टका रे आसुला से जिनसा आसुला 110 टका रे, बिकॉज़ 100 कोटी टका पे डबल टैक्सेशन होतला, डबल टैक्सेशन और रिकरिंग टैक्सेशन दैट जीएसटी कम होइतांदा, एंड द बेनिफिट दैट इज अराइजिंग फ्रॉम द जीएसटी विल बी गिवन टू द कस्टमर, जे जिनस किनुची ताकू फायदा होइतांदा, आ कोन होइतांदा, जो स्टेट्स माने अछंदी, द कंज्यूमर स्टेट्स से माने को फायदा होइतांदा, गाड़ी बनुची मुंबई रे किंतु गाड़ी किनला ओडिसा लोक, फास्ट कोन होतला जेतल जीएसटी नथिला सेतले टैक्स बेनिफिट वाज गिवन टू द प्रोड्यूसर स्टेट लाइक मुंबई, बट जीएसटी जेतल आसला, जीएसटी चेंज कराला, दैट इज कॉल्ड एज द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम, जो डेस्टिनेशन अच्छी, जो जगह एक्चुअल कंजप्शन होची सेही स्टेट को बेनिफिट मिलिबो, ना कि जे प्रोडक्शन कर, आउ जे बुझलो गोटे सिंप्लीफाई द टैक्स, आगुरु थिला वैट थिला सेंट्रल लो सेल्स टैक्स थिला, ए सब जिंस थिला ताकू सिंप्लीफाई करिया पे जीएसटी बना गला,
जोटा कि सब इनडायरेक्ट टैक्स को गोटे ब्रैकेट रे नहीं आसा डायरेक्ट टैक्स लाइक इनकम टैक्स इट इज डिफरेंट एटा जीएसटी आसुनी हम पढ़िया डिटेल रे जीएसटी कौन आछि कौन आसनी हाउ टू कैलकुलेट द जीएसटी केमिति कैलकुलेट करा जाए जदि आम जानवा केमिति जीएसटी कैलकुलेट करा जाए देन ओनली वी विल नो कि आदर केते पैसा बचत हो परिबो एंड हाउ द कस्टमर विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम द जीएसटी तापर कोन हला इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट एबे हमरो इंडिया यूएस ट्रेड डील जेतले फाइन नथिला USA imposed a 50% tariff on India. A 50% tariff on India. तागुरु के थिला तागुरु 3%. इंडिया यूएसए तो कहीं की ट्रेड करे बिकॉज ऑफ सरप्लस एटा मन रखियो सब बळे सरप्लस ट्रेड इंडिया रो यूएसए तो हुए माने जदि आमे तांगु 40 बिलियन रो जिंस किनुचु आमे तांगु 60 बिलियन रो जिंस हम बिकुचु सब बळे यूएसए रो इंडिया को पैसा आसे इंडिया से चाहे कि एमती कंट्री सहित से डील करू जो तार इनकम आसो आम जी इंपोर्ट करते यूएस ताठू अधिक एक्सपोर्ट करते लाइक स्टील्स वगैरह आम बहुत इंपोर्ट करते सॉरी आम बहुत एक्सपोर्ट करते बट ये जो टैरिफ आसला ओके इंडिया यूएस रिलेशन टैरिफ कम करागला एबे बोधे 18% ना केते अछि अगेन तांगा सुप्रीम कोर्ट रो verdict आसला कि इट इज नॉट फेयर ओके आमे देखियो एसो जिंसो इन इंटरनेशनल ट्रेड हाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट आमे देखिबा ट्रेड डेफिसिट आमे देखिबा ट्रेड डेफिसिट हेले बैलेंस ऑफ पेमेंट को केमती इंपैक्ट करती व्हाट इज द कैपिटल गुड्स okay what is the capital goods that we import and export what is the services car impact kon rochi how to manage the bop a bop ki manage kare pe kon सब institution आस्तिला that also we need to understand तापर हम देखियो different sectors of indian economy कौन अच्छी सेक्टर इंडियन इकोनॉमी सेक्टर हला प्राइमरी then secondary then tertiary then quinary आज किसी लिखनी जो लेक्चर दियो मैं तुमको कहि देबी and also will provide you the notes हम दबो but it's better कि प्रतिदिन खाता कलम धरि के बसिबो लिखियो don't enjoy it as a movie ठीक मेहनत करियो पढ़ियो okay primary sector like agriculture like mining fishing जोटा हम डायरेक्टली नेचर नु डिराइव करछन फिशिंग जोटा करा होती जोटा हमें सी रो फिश आनतनी कि रिवर रो आनतनी सेठी हम थोड़ा किछ ने कि छाडी देले कि ता जान फाल छाडी देले कि नै ना माइनिंग पुली की बना होती that is from the nature then secondary means manufacturing processing सीमेंट आसो मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट जहाँ भी जो लाइमस्टोन है कि बाकी जिनको जो मटेरियल आसला ताको मिसेला पर हम तैयारी करछन दैट इज प्रोसेस दैट कम्स अंडर योर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल ओके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ये सब आसो सेकेंडरी देन व्हाट इज टर्शियरी कौन इट इज सर्विस सेक्टर लाइक आईटी बीपीओ केपीओ आईटीएस ये सब आसे तुम टर्शियरी देख तुम जो अच्छी गोटे एग्जांपल दूसरी द बिल्डर ओके बिल्डर जिते जिनस बिकुची दैट कम्स अंडर द सर्विस
যেটা সে ক্রিয়েট করছে দ্যাট কামস আন্ডার द मैन्युफैक्चरिंग और सेकेंडरी एंड टर्शियरी बोथ डिपेंडिंग अपॉन द वर्क जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है ना दैट कम्स अंडर मैन्युफैक्चरिंग बट बिल्डर माने जेतल सेल करନ୍ତି दैट कम्स अंडर दिस टर्शियरी टीचर पढ़ाइबा डॉक्टर डॉक्टर कले कोन से कोन करछि ट्रीटमेंट करछि ना बाय यूजिंग सम मेडिसिन्स इंजेक्शंस सलाइन्स सेवा गुल्स लॉयर तमरो माने तुम जदि हायर करछो तुम कि केस चलछि कोर्ट रे देन लॉयर विल डिफेंड यू तमरो कथा को नेकी जज को कहबो इन सच वे दैट द जज विल बी थिंक दैट यू आर मींस तमे तुम गिल्ट नहीं कि तमे दोषी नो कि तमे विक्टिम तुमको न्याय मिली that is the service that is given by the lawyer engineer providing consultancy teachers wipro IT engineers जोने सर्विस होचन केपीओ बीपीओ बिजनेस प्रोसेसिंग जोन करंती फोन रे हेल्प दियंती कस्टमर केयर जोटा हम कहउछंती इट इज बिजनेस प्रोसेसिंग ठीक ए सब रहले तमरो टर्शियरी देन क्वीनरी देखो तुम गाँव सरपंच अच्छा ठीक मिस्टर एक्स तुम गाँव सरपंच मिस्टर एक्स सी गोटे डिसीजन ने किसी भी गोटे डिसीजन ने सेटा तुम सेटा तार इंपैक्ट कौन हम मिस्टर एक्स जो डिसीजन ने दैट विल इंपैक्ट द पंचायत बट जिते मिस्टर मोदी विल टेक ए डिसीजन जिते प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री विल टेक डिसीजन इट विल इंपैक्ट एवरीवन yes or no similarly scientist similarly your CEO of a company similarly the chief medical officer एमान जेतल गोटे डिसीजन नेबे गोटे सीईओ गोटे डिसीजन नेला कि एथरो आमे काहा को बोनस दबानी खत्म तो जे लक्ष लोक काम करथि लक्ष लोक को बोनस मिलिबोनी से कहला कि एथरो 20% बोनस दबा ताले लक्ष लोक बेनिफिट हेबे जेतले जनक डिसीजन बहुत लोक को इंपैक्ट करिवो सेबला काम को हम कोन क्वीनरी डॉक्टर माने कोन कले जेतले वैक्सीन डेवलपमेंट कले इट इंपैक्टेड द होल वर्ल्ड रे जेते लोक थे समस्त को इंपैक्ट कला साइंटिस्ट किसी डिस्कवरी करछंदी दैट इज आल्सो कम्स अंडर दिस क्वीनरी एक्टिविटीज ओके कौन हम देखले सेक्टर से हमें देखले प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वीनरी हमें आउरी डिटेल रे पढिबा because today is just an introduction to Indian economy so we are understanding the syllabus then international financial institution IMF WB ठीक international monetary fund WB how they form Britain Woods twin Britain Woods form मतलब कहीं की okay their formation why तांकर काम कोन थला व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव जो डब्ल्यू बैंक सॉरी वर्ल्ड बैंक हेतला कि आईएमएफ हेतला गोटे जगह सने स्टार्ट हेतला बट दे आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव गोटे स्टार्ट हेतला वर्ल्ड बैंक टू परे टू रिकंस्ट्रक्ट गोटे स्टार्ट हेतला टू मैनेज द बैलेंस ऑफ पेमेंट गोटे स्टार्ट हेतला जो स्मॉल स्मॉल कंट्री अछंती ताकू डेवलपमेंट करिया पे देखियो इंडिया रे बहुत सारा प्रोजेक्ट्स was run by World Bank. World Bank fund देके बहुत सारा प्रोजेक्ट रन कराए. That is for development. Okay, तारा भी बहुत सारा अलग-अलग ब्रांचेस होते हैं. हम ताको भी देखिए. World Bank रो अलग-अलग ब्रांचेस होते हैं. We'll study about that also. Then we'll study about the contemporary issue in economy. हमारे economy रे contemporary issue कौन? Like NPA, non-performing assets. Then the MSME sector को जो ग्रोथ है पारुनी मिसिंग मिडिल मीन्स हमारा प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर वगैरह अच्छी जहाँ जमी चलती टर्शियरी सेक्टर आईटी वगैरह एथरा 56% आछि एथरा 17% आछि
बट जो सेकेंडरी थिला एते जति ग्रोथ हवा कथा जति कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हवा कथा हेटा हिपरला यदि इंडस्ट्री प्रॉपर्ली ग्रोथ होता इंडिया रे देन इंडस्ट्री हैव द एबिलिटी टू absorb maximum number of unskilled and skilled labor इंडस्ट्री बहुत सारा स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर नहीं पाता तो इंडियन इकोनॉमी आउट स्ट्रांग होता बट इंडिया रे कोन हला प्राइमरी पर डायरेक्टली हमें सेकेंडरी डेवलपमेंट न हो टर्शियरी लेवल डेवलपमेंट है लाइक द सर्विस सेक्टर इंडिया बहुत सारा इंजीनियर अच्छा बहुत सारा डॉक्टर अच्छा दे आर डूइंग वेल से किसी असुविधा नहीं बट व्हाट अबाउट द अनस्किल्ड पीपल जो बहुत सारा स्किल्स नहीं बिकॉज ऑफ ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन दे हैव नॉट डेवलप्ड एनी स्किल तो तांको केमिति हमें मेनस्ट्रीम को आनिबा सेति हमें बहुत सारा स्कीम्स करछन ना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तांगरो स्किल डेवलपमेंट करछन ठीक अछि तांको हमें स्कीम से पैसा भी दउछन जेमति गोटे स्कीम थिला विश्वकर्मा स्कीम 10,000 रुपीज आर गिवन स्किल डेवलपमेंट पे बट स्किल डेवलपमेंट हला पर तांको अब्जर्व करिया पे सेति हम पारे इंडस्ट्री डेवलपमेंट हे परला सेटा प्लानिंग कमिशन हम जेतर पढिबा से विषय में कथा हबा ठीक अच्छे कंटेम्परारी इश्यू आउ कौन कौन इश्यूज अच्छी जमी आम ट्रेड डील चली यूएस सहित आम रिलेशन मझे ट्रेड डील को लेकिन माने कौन कह जी आम ट्रेड करा था से अनुसार कर पारे देन वी हैव साइन द मदर ऑफ ऑल डील मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील करते ना क्या इट वाज विथ यूरोपियन यूनियन सहित आम एत बड़ डील साइन कले दैट इज टर्म्ड एज मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील ठीक ये सब जिन हम पढ़ा देन ओडिशा इकोनॉमी हम कौन पढ़िया विल स्टडी अबाउट द बजेट ऑफ ओडिशा विल स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ ओडिशा विल स्टडी अबाउट डिफरेंट स्कीम्स ऑफ ओडिशा स्कीम्स सब बहुत सारे क्वेश्चन आती बजेट रो भी क्वेश्चन आती पचास कौन कौन नुआ बजेट रे माने बजेट रे कौन डेवलपमेंट है इवन मेन से भी क्वेश्चन आती आज ओके विल स्टडी अबाउट ऑल दिस थिंग ओडिशा इकोनॉमी आम ये सब जिन पढ़ा रोड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ जहाँ भी स्कीम्स वगैरह अच्छे विल डिस्कस ऑल ठीक तो विल टेक ए स्मॉल ब्रेक ऑफ 2-3 minutes and then we'll start the next part okay just 2-3 minutes
Welcome back. So this is all about the Odisha economy and the syllabus for the prelims. Ketna chapter? Choduta. ठीक ଅଛି. चलो. So now we'll see the syllabus for mains exam. Mains exam the syllabus हम देखिए and then we'll move ahead. Okay. देखो. It is the syllabus of mains. ठीक. This is the schemes of prelim. The prelims वाला हमें mains को जो हमें main पेपर 3 दिखता है हमें. इससे this is syllabus for written exam. এটা নয় পেপার 1 এটা পেপার 2 পেপার 3 এটা দেখো টেকনোলজি ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট বায়োডাইভার্সিটি এনवायरमेंट সিকিউরিটি এন্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট তো ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট রে we will study about Indian economy and issues related to planning कौन प्लानिंग को लेके इशू अच्छी mobilization of resources growth development and employment प्रिलिम ना देबे हम गोटे पढिबा हम एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट गोटे चैप्टर अच्छी तादरे स्मॉल पार्ट बिकॉज ओपीएससी इन्फ्लेशन आउ डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट सबको लेके क्वेश्चन पचारे राइट फर्स्ट पार्ट होला कोन इशू रिलेटेड टू प्लानिंग को नहीं कौन कौन इश्यूज अच्छी मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गोटे क्वेश्चन पचार द बोटलनेक्स ऑफ इंफ्रा इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुझिपार बोटलनेक्स माने बाधक जोटा कि हिंडर करछि द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया जैसे ही बोटलनेक्स को हमें एड्रेस करदेले प्रॉपर्ली देन इंडिया ग्रोथ विल बी फास्टर और डेवलपमेंट विल बी मोर फास्टर पचार इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर कथा आसे तुम क्या विषय कथा हम यू विल टॉक अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट ओनली द communication but also about energy about social infrastructure everything communication में तुम कथा रोड विषय कथा फ्लाइट विषय कथा गोटे गोटे लाइन रे सारा क्वेश्चन केमती एड्रेस कर जमी रोड सागरमाला हो गला ठीक तापरे माने फ्लाइट रहा आस्ते उड़ान हो गला तापरे वाटरवे रे आसो जो नेशनल वाटरवेज तापरे सागरमाला प्रोजेक्ट ये सब जिन तुमको लिखा पड़ो देन कमिंग टू द सेकंड पार्ट गोटे कम्युनिकेशन एनर्जी कोल एनर्जी तार पॉल्यूशन माने पॉल्यूशन वगैरह तार प्रॉब्लम आम केमिति रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करछंती प्रधानमंत्री जो अछि ना गोटे स्कीम प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना एलईडी स्कीम ए सब तुमको सेतरे मेंशन करिया पड़िबो ठीक ए सब जिन तुम इंफ्रास्ट्रक्चर आइबो social infrastructure, schools, colleges, hospitals, then inclusive growth and issues arising from it. Inclusive growth, एटा भी गोटे बहुत बड़ा क्वेश्चन है सबुतर पचारछि ग्रोथ जहां भी हमर होउछि इट शुड रीच टू द लास्ट पीपल इन द लाइन और टू द लास्ट लेयर ऑफ द पॉपुलेशन केवल रिच लोक मानकू डेवलपमेंट डेवलपमेंट और ग्रोथ इट शुड बी इंक्लूसिव सबू लोक आमको ग्रोथ करिया पड़ो इंक्लूसिव मीन्स वी नीड टू
address almost everyone including the vulnerable. जो माने vulnerable groups असंती को माने असंती से माने like the women, like the children, like the old age people, like the SC ST, like okay tribal वगैरह जो रहिले TBTGs समस्त को नहीं की डेवलपमेंट कले ही ताकू इंक्लूसिव डेवलपमेंट को आजिबो ए इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट बहुत सारा स्कीम्स करथिले जेमिति समस्त को बैंकिंग सिस्टम रे इंक्लूड करिया पई माने स्टार्ट हेतला नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक के करथिले इंदिरा गांधी करथिले पीएम मोदी कौन करथिले प्रधानमंत्री जन धन योजना तापर डिजिटल मिशन सब स्टार्ट हला जीरो अकाउंट बैलेंस पीएम किसान सीएम किसान बिजु स्वास्थ्य कार्ड एबे आसी जो आयुष्मान भारत माने गवर्नमेंट चेंज हला पर हेडा इंप्लीमेंट हला ना ओडिसा रे देन गोपबंधु जन आरोग्य योजना ए सब जिंस तमरा आसीबो दिस इंक्लूसिव ग्रोथ रे आउ इश्यूज कोन कोन अछि अवेयरनेस कमी अच्छी लिटरेसी कमी अच्छी कौशल माने स्किल्स कमी अच्छी हाउ टू टैकल दैट मैन पावर कम अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर कमी अच्छी ए सुनो ए सब जिंस को हमें केमिति टैकल करियो व्हाट आर द इश्यूज देन गवर्नमेंट बजेटिंग इंडिया एंड ओडिशा एथरो गोटे क्वेश्चन डायरेक्टली पचारथिला ओडिशा रो बजेट रो डायरेक्ट पचारथिला कि माने ओके माने जो स्कीम्स वगैरह आथिला रिसेंट बजेट रो कौन कौन स्कीम्स वगैरह डेवलपमेंट हेतिला और पर्टिकुलर सेक्टर पचारथिला से so you can expect questions from that then land reform in India and Odisha जेतबळे आम पाखर जति भी लैंड होल्डिंग अच्छी इट इज फ्रैगमेंटेड 86% of Indian population 86% more than 86% of Indian population holds less than 1 hectare of land माने just marginal farmer लैंड होल्डिंग एते कम अछि किंतु किछि लोक बार बहुत सारा लैंड थिला तो ड्यूरिंग 1950 जेतबळे इंडिया इंडिपेंडेंस पाइला बहुत सारा मूवमेंट करा गला लैंड रिफॉर्म को देखि कि गोटे लैंड सीलिंग करा दिबो ताटो अधिक लैंड जहां पाकर अछि दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लैंडलेस पीपल गोटे कांसेप्ट थिला ना जमींदारी गोटे कांसेप्ट थिला जमींदारी जो कांसेप्ट थिला गोटे गोटे जमींदार पाखरे 100 200 500 हेक्टर्स ऑफ लैंड वाज देयर तो सिस्टम बनाला कि 25 एकड़ पर्यंत जमी गोटे पाखर लोक पाखर रहइबो ताटो अधिक आमे आनी कि ताकू डिस्ट्रीब्यूट करिबा बट एटा सक्सेसफुल हे पल्ला नै भूदान मूवमेंट करा गला भूदान मूवमेंट बाय विनोबा भावे भूदान मूवमेंट कले एतरे कोन हला लोक माने ग्राम दान कले माने जमीदार माने गोटे पूरा गां दे देले गार लोक को जमी फ्री रे दिया हला भूदान यज्ञ भी हला भूदान यज्ञ एतरे भी कोन करा जमी एक्सेप्ट करके लोक लैंडलेस लोक भीतर बंटा होतला हमरो कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेंडमेंट भी करा गला लैंड रिफॉर्म को नहीं की बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल काहे सक्सेसफुल हलानी बिकॉज ऑफ द मींस देयर इज नेक्सस बिटवीन द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस जमींदार माने फंडिंग करथिले पॉलिटिशियंस were forced not to bring any law or to bring any law but having some loopholes they loophole को एने फायदा उठेले and in 1970 around 1970 जेतले इंदिरा गांधी को एक प्रोग्राम असला गरीबी हटाओ सेतबेल को माने दिस भूदान एंड लैंड रिफॉर्म वाज माने लोक माने इंटरेस्ट नेलेनी आ धीरे धीरे हेडा पळेला बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग दैट अवेयरनेस एबे भी तमे जदि किसी इंटीरियर एरिया को जीवो गोटे लोक को जदि किसी गोटे एमती रोग माने गोटे बड़ रोग होइदिवो
लोक कहबेनी माने दे डोंट वांट टू नो द साइंटिफिक कॉज आल्सो काबू किसी गोटे बड़ कैंसर वगैरह व्हाटएवर एवं कैंसर इज वेरी मच नॉर्मल ओके एग्जांपल ने गोटे पोलियो गोटे छोट पिलार पोलियो हो जाइए ओके एटा तो बहुत रेयर है बट स्टिल एग्जांपल दियो तो लोक मैंने कहबेनी कि माने ड्यू टू कि मेडिसिन जो टीका वगैरह वैक्सीन वगैरह नेलानी बोले हला पीपल विल स्टिग्मेटाइज कहबे ना ये गोटे आर जन्म या करथिला ता बापा करथिला ता पुओ को दंड मिलला ओके ऑल दिस नॉनसेंस थिंग्स लोक मैंने जानिया को चाहू ना कि व्हाट आर द साइंटिफिक कॉजेस बिहाइंड इट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस एटा तांकर दोष नुह बिकॉज दे हैव नॉट दैट एजुकेटेड से एजुकेशन मिलनी कि से एक्सपोजर पाई ना सो दैट दे कैन थिंक इन ए डिफरेंट वे साइंटिफिक वे रे चिंता करने तुमको नॉलेज दरकार आ जो लैक ऑफ अवेयरनेस अच्छी जो आम कौन कह जो अंधविश्वास को लेकिन लोग चलते बिले रास्ता काटिले लोक जीवेनि रही गाड़ी आगे कार इंश्योरेंस नथिबो बट गाड़ी आगे लेंबू टंगई थे तो जो साइंटिफिक टेम्पर डेवलपमेंट है से जगह अवेयरनेस आसनी और से जो अवेयरनेस नथिला लोक मैंने इंटरेस्ट भी नेलेनी फॉर दैट रीजन दिस बिकम ए फेल्युअर हो पारानी जो नेहरू जी स्टार्ट करते लैंड रिफॉर्म इट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूव यदि सक्सेसफुल होता ताले बहुत ही माने हमारा डेवलपमेंट आउट फास्ट होता then effects of liberalization of the economy changes in industrial policy and effect of industrial growth 1990 रे हमारा इंडस्ट्रियल हमारा एलपीजी आसला नॉट द गैस liquefied petroleum gas कथम कोड एलपीजी इज having three terms liberalization privatization and globalization कौन करा लिबरलाइजेशन करा जोटा गवर्नमेंट धरिक बसला ये केवल गवर्नमेंट ही करिवो ताको खोल दियाला बाकी माने भी कर परिवे प्राइवेटाइजेशन माने गवर्नमेंट जो जो दा ओनरशिप थिला किछि किछि प्राइवेट को दवा स्टार्ट कला प्राइवेट माने भी दादर इन्वेस्टमेंट करिया स्टार्ट कले एंड ग्लोबलाइजेशन मींस द डोर इज ओपन टू एवरीवन देखियो तो 1990 पाखा होइतला ना तो सब गाड़ी आस्तला तुम मन थिबो यदि टोटल तुम देखि दियो हीरो होंडा गाड़ी आस्तला हीरो होंडा ठीक बाजाज कावासाकी देन मारुति सुजुकी बट एबे तुम देखो हीरो रो अलग गाड़ी अच्छी होंडा रो अलग गाड़ी अच्छी स्प्लेंडर हीरो रो होंडा रो कौन अच्छी यूनिकॉर्न वगैरह ठीक सिमिलरली बाजाज रो अलग कावासाकी रो अलग मारुति रो अलग सुजुकी रो अलग आगु जेहेतु कॉन्सेप्ट थिला कि सेमाने इंडिया रे बिजनेस करिया पले इंडिया रो कंपनी सहित टाई अप करिया पड़िबो दे नीड टू डू दिस बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी भी सेमती थिले भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस भारती इंडिया रो एक्सा बाहर रो जने मिसिकी इंडिया रे इंश्योरेंस कंपनी चलुथिले जेतबेले ग्लोबलाइजेशन हैला दे कैन इंडिपेंडेंटली डू देयर बिजनेस हमर मार्केट समस्त पे हम ओपन करले ओके सेटा बीओपी एतरा हम पढिबा ना से ता सहित एटा हमर अछि कि व्हाट आर द कंडीशन दैट इज गिवन बाय आईएमएफ टू बेल आउट जेतबेले हम पाकर ओनली वी हैव 7 वीक्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जेतबेले हम आईएमएफ को जाइतिले टू बेल आउट हम पाकर बैलेंस ऑफ पेमेंट रो क्राइसिस हेतिला सेतबेले से कहितिला कि यू नीड टू रिफॉर्म योर मार्केट सो दैट आईएमएफ विल गिव यू फंड ओके आईएमएफ कहले कि यदि तुम मार्केट को रिफॉर्म करो देन ओनली आईएमएफ विल गिव यू फंड सो दैट नेक्स्ट टाइम यू डोंट कम टू आईएमएफ बारंबार तुमको आईएमएफ पाखु आसी पैसा मागिया पड़ो ना तुम ताको रिफॉर्म करो तो इंडिया रिफॉर्म कला आज का डेट रे हम पाखरे ऑलमोस्ट 600 प्लस बिलियन डॉलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अच्छे हम पाखरे ठीक फॉरेन एक्सचेंज हम पाखु से माने से ये नहीं कि हमें
चिंता करिया आग हप्ता पे हमें पैसा कोठू अरेंज करिया कि हमें किसी इंपोर्ट की एक्सपोर्ट करिया अछि वी हैव दैट स्ट्रेंथ accumulated over years 1990 ପରେ एलपीजी आसला तळे तापर सिस्टम हम चेंज होला हमरो ग्लोबलाइजेशन होला प्राइवेटाइजेशन होला मार्केट ओपन होला लाइसेंस राज खत्म करा गला तापर डेवलपमेंट भी होला ता आगु कोन कहथले 1990 आगु you will see the GDP before 1990 was around 2 to 3%. 1990 पर केते हला एबे तो केबे 7 to 8% भी पड़ू ओके ए जो 2.3% जाउतला दैट इज टर्म्ड एज हिंदू ग्रोथ रेट एटा क्वेश्चन ऑलरेडी पचारची हिंदू ग्रोथ रेट माने एते स्लो चलथला ठीक वन प्रोफेसर नेम्ड इट एज हिंदू ग्रोथ रेट हिंदू लिबरलाइजेशन परे हमरो जीडीपी 7-8% रे डेवलपमेंट हो समटाइम ओडिसा's डेवलपमेंट surpasses the national average साउथ को ओडिसा 7.8 एमती डेवलपमेंट हो राइट सो इफेक्ट ऑफ एटा पे देखिबा आउ इंडस्ट्रियल पॉलिसी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वेरी इंपोर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन ऑफ ओपीएससी मल्टीपल टाइम्स से पचास सब्जी तो वी नीड टू स्टडी दैट एज वेल ठीक है देखो नेक्स्ट ला तमरा इंफ्रास्ट्रक्चर कौन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी एनर्जी एनर्जी हमें पढ़ा बहुत रिन्यूएबल एनर्जी आउ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी व्हाट आर द रिफॉर्म्स दैट इज बीइंग टेकन प्लेस कौन रिफॉर्म निया आइची एंड व्हाट इज द चैलेंजेस एनर्जी तुम एबे देखो हमें मैक्सिमम जहाँ भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमें यूज करछंती दैट इज इंपोर्टेड इंपोर्ट करछंती ओनली वी आर एक्सट्रैक्टिंग 10% फ्रॉम आवर ओन हमें 10% भलिया जो आलिया बेट अच्छी जो केजी बेसिन अच्छी ओनली 10% भलिया एनर्जी हमें एक्सट्रैक्ट करछंती इंडिया पे बाकी 90% हमें इंपोर्ट करछंती ता कोन कि रिफाइनरी रे रिफाइन करिकि हमें यूज करछंती आउ बिकुछंती बाहर कंट्री को ओके जेतबेले एबे जेमती चलछि एबे ईरान यूएसए इजराइल वार चलछि से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद कर देला ओके इंडिया इज फेसिंग हिट ऑफ शॉर्टेज ऑफ एलपीजी ओके इंडिया इज हैविंग दैट एलपीजी स्टोरेज एमती नहीं कि इंडिया रे पूरा क्राइसिस हो जाइछि नहीं हम पाखे अच्छी बट इट इज द इम्पैक्ट ऑफ माने जिन न थाए ओडिसा रे बात्या हवा थो 3 दिन 4 दिन सब न्यूज चैनल को गोटे काम होला खाली बात्या हबो जदि से मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कहथो कि 70 किलोमीटर पर आवर रे पवन बहिबो एटा बड़े बड़े 170 कर देबे पचारि आपण कोन कहउछंती 70 किलोमीटर से कहबे कहबे नहीं नहीं 70 तो आपण कहले काले बढ़ी पारे तो हाँ मे भी गस्ट विंड बढ़ी 110 हो पारे कहबे नहीं नहीं गस्ट विंड तो ठीक अछि आउ काले बढ़ी पारे एमिति करी करी सान चाहिबे कि जेमिति गोटे ब्रेकिंग न्यूज आसो आमे कहबो 150 170 चलिबो 4 दिन सेटा न्यूज देखेबे ओडिसा रे सबु माने मौजूद थिबो हम पाखरे वी हैव टू स्टॉक राइस भी थिबो आलू भी थिबो सब थिबो बट सेतबे कोन हबो सब रेट बढ़ी जिवो आलू रेट हे जिवो 80 टंका चाउल रेट हे जिवो 100 टंका तेल रेट हे जिवो 250 कहीं लोक ने भाबिबे कि बात्या हे जिवो तापर आ किछ मिलिबनी जेमिति 1999 रे हेइतिला 1919 दुटा सुपर साइक्लोन कहउछंती बट दैट इज ए रेयर इंसिडेंस जेतला हम सैटेलाइट वगैरह नथिला आमे जानि पर नथिले बट वी हैव नाउ द सैटेलाइट वी कैन एग्जैक्टली एस्टिमेट जेतला हम जानि परछन तार गतिपथ कोन हो बात्यार आमे मेजर कर परछन व्हाट इज द विंड स्पीड आमे एटा तो इंश्योर कर परिबा ना बट लोक माने भीतर गोटे कोन से कंपटीशन आसलो ओके दैट इज आल्सो इकोनॉमिक टॉक तो किछ लोक जानि रेट बढ़ेबे सेतबेले ए सब जिंस अचानक बढ़ी रहिबो तो एबे देखो एग्जांपल आई वाज गोइंग थ्रू ए स्टेटमेंट ऑफ ओके मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम जाने कहले बिफोर वार देयर इज 55.5 लाख सिलेंडर ऑर्डर पर डे एबे लोक पैनिक हे केते करछो 75.5 लाख पर डे तो जदी एई बेला पैनिक ऑर्डर करा दिबो तार सचेत होबो ना तापर तो ना 50 55 टू 75 हो गलानी 75 लाख पर डे चिंता करो 75 लाख
per day. लोक माने पाखरे 80 सिलिंडर, still they are keeping more घरे रखला काले आउ मिलिबनी. Government कौन कला to ensure that maximum supply should be given to the domestic consumers. तमाने industrial जो कंज्यूमर थिले तांको एलपीजी बैन करथिले, तांको गैस देलेनी, बिकॉज दे वांट टू एंश्योर कि डोमेस्टिक हॉस्पिटल और हॉस्टल, डोमेस्टिक हॉस्पिटल और हॉस्टल ए मानकु प्रॉपर अमाउंट रो एलपीजी मिलु. बट ए जो गवर्नमेंट डिसाइड करे लोक मान अछन, लोक मान ताको अलगा वे रे नै गले परसिव कले कि आ सोच कि आउ एलपीजी मिलिबनी. Government also imposed the Essential Commodity Act 1955. এটা impose কলে কোন হবো, you can store up to a certain limit, তারপর রাখলে then there will be punishment. Government আকু भी impose କରିବାକୁ ପଡିଲା, because ଲୋକମାନେ panic ହେଇକି ଅଧିକ ଅଧିକ ଜିନିଷ store କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ. कोरोना टाइम रे सेमति ହେଲା ना, ऑक्सीजन सिलेंडर जहाँ दरकार नहीं से आनी रखला काले मो दरकार पड़िबो. जो ट्रस्ट डेफिसिट हो गला लोक भितर आंबुलांस वाला जो फ्री ऑफ सर्विस से चार्ज कले 20,000, मेडिसिन जो 10 टका मिले तो से चार्ज कले 200 टका. तो एत ट्रस्ट डेफिसिट हो गला, लोक मैंने जो जहाँ मिलला ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह घर रखले, मोर जो दरकार हो मो पाखे कम आसो. 90% लोक कम लगे, 90% लोक कम लगे अधता से सुर कर रखिले, जोटा कि क्राइसिस को आउट बढ़ेगा. ठीक, देन ओके कौन कहला मैं एनर्जी, देन पोस्ट रोड्स. जमती रोड रे कौन हम रोड से कौन आसो, ऑल द प्रोजेक्ट्स. ओके, नेशनल हाईवे रो जते प्रोजेक्ट सब होनथी, भारतमाला, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ना. इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कौन हम बहुत हाई स्पीड ट्रांजिट हम, मूवमेंट ऑफ गुड्स विल बी सुपर माने बहुत अधिक स्पीड रे गले कौन हम पेरिसेबल आइटम बहुत जल्दी खराब माने खराब होगा लोक मारे पहुंच दियो. ओके, देन एयरपोर्ट, एयरपोर्ट कौन आसो उड़ान, आरसीएस उड़ान ए सब स्कीम आसो. रेलवे, रेलवे सिस्टम रो इंफ्रास्ट्रक्चर केते लेंथ अछि, केते लोक कम्यूट करछन्ती, ए सब विषय हमें एते पढिबा. इंडिया इज having one of the highest or busiest route of रेलवे, सब लंबा लाइन. तापरे एयरपोर्ट एक्सपेक्टेड बाय 2030 इंडिया हम सब बड़ माने कंज्यूमर ऑफ दिस एयरपोर्ट. तापरे ओडिसा रे भी पढिबा, हमें ओडिसा रो बजट रे केमती development करा होची for the development of bridge, for the development, there are some authorities also created during the last budget for supervising the creation of world class infrastructure, roads, state highway, bridge, okay, rural roads. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रे जो स्कीम चली थी, जो पहुंची पारनी रोड सेटा केमते हम इंश्योर करिया कि समस्त हम पाखरे ऑल वेदर रोड्स विल बी अवेलेबल. देन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ओडिशा इश्यू एंड पर्सपेक्टिव. इंडस्ट्रियलाइजेशन ओडिशा रे काहे कि पारुनी, डिस्पाइट वी आर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ माइंस. बहुत सारा माइंस अछि ना आम पाखरे, केते आम पाखरे ऑलमोस्ट 55% ऑफ, ओके 55% ऑफ आयरन ओर आम पाखरे अछि, बॉक्साइट आम पाखरे अछि, क्रोमाइट आम पाखरे अछि, लाइमस्टोन अछि. स्किल वी आर लैक इन इंडस्ट्रियलाइजेशन. कौन कौन इश्यू अछि, व्हाट इज द पर्सपेक्टिव्स, कौन प्रोस्पेक्ट होती केते बार ना ग्रो कर परिबा. ठीक, देन इन द लास्ट सेगमेंट वी विल डिस्कस अबाउट दिस एग्रीकल्चर पार्ट. एग्रीकल्चर पार्ट रे हम कौन पढिबा, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इश्यू रिलेटेड टू कंस्टेंट ई टेक्नोलॉजी, सब क्वेश्चन डायरेक्ट पचारि सकछि. Then issue related to direct indirect farm subsidy,
जेमि हम एमएसपी कथा कहउछंदी ठीक इनडायरेक्टली जेमि पीएम किसान हे गला सीएम किसान हे गला देन मिनिमम सपोर्ट प्राइस हे गला पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम what are the objectives of PDS functioning limitations revamping issue of buffer stock and food security buffer stock जे न रखिबा जेतले किछि गोटे क्लाइमेट इश्यू हे गला कि सुखा पड़ी गला फ्लड हे गला हाउ टू फीड द पीपल फॉर दैट वी नीड बफर स्टॉक टेक्नोलॉजी मिशंस 506 टेक्नोलॉजी मिशन अछि ताकू हमें कवर करबा इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग इन ओडिशा एंड इंडिया ऑलमोस्ट 8% ऑफ द पीपल और माने आज के डेट रे भी 18% लोक डिपेंड अपॉन दिस एनिमल रियरिंग बिजनेस आ जो माने चाष करछंदी ऑलमोस्ट 30-40% लोक घरे किछ ना किछ एनिमल्स अछि वेदर इट मे बी द पोल्ट्री इट मे बी द काउ रियरिंग गाई रखिबा छेली रखिबा कुकुड़ा पालिबा डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022 हवार दिला ठीक देन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड ओके दीटा इंडिया ओडिसा रो तार स्कोप सिग्निफिकेंस ओडिसा रे सिग्निफिकेंस कोन फूड प्रोसेसिंग हेले कोन फायदा हबा हमकु एंड व्हाट इज द स्कोप हमें देखिया कि केते स्कोप बढ़ी छि लोको ने हम बागर ऑप्शन तो पिनिया पे ना खाली हम खाली प्लान करी खाली प्रोडक्शन कर दिल हबो व्हाट इज द स्कोप देन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट अपस्ट्रीम ठीक अपस्ट्रीम कोन डाउनस्ट्रीम कोन तार रिक्वायरमेंट देखो गोटे यार फूड प्रोसेसिंग हबो रॉ मटेरियल तो दरकार ना तुमको भल मेसीन भी दरकार तुमको स्किल लोक भी दरकार एटा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कोन तयारी हला पर मार्केट भी दरकार बिकिया पे सप्लाई चेन दिवा दरकार तुम ठीक पहुंच पारथुबो कोल्ड स्टोरेज दिवा दरकार अदरवाइज खराब हे जिंस देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट ओके ऑल ऑफ दिस विल कवर अंडर दिस so तीनटा सेक्शन तीनटा पार्ट विल स्टार्ट विथ प्रिलिमिनरी then we will move to the economic development of mines and agriculture all of this will be completed around 40 classes and esta class re ame sadiva so all of you attend all the classes without any miss kichi doubt kichi bhi pachare achi you can raise your hands I will give you chance to ask ठीक किसी question pachare achi you can ask and we will solve it otherwise you can reach to the administration so tagu bhi question pathai paribo they will give me and I will discuss it in the class यदि क्लास टाइमिंग बाहर तुम केतले क्वेश्चन पचारे अछि तुम रिकॉर्डिंग देखुछो आ तुम किछि क्वेश्चन पचारे अछि यू कैन आल्सो डू लाइक दैट ठीक अछि so this is all about the first lecture आज रथिला so we discuss about the syllabus and we discuss about देखो आ टिके म तुम कहि दउछि so in today we discuss all this कल हम स्टार्ट करते कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी ठीक कैरेक्टरिस्टिक हम देखिबा then we will study about इंडियन इकोनॉमी कैरेक्टरिस्टिक पढ़िया ऑक्सफाम रिपोर्ट पढ़िबा ऑक्सफाम रिपोर्ट रे जो फाइंडिंग अछि ताको हम डिस्कशन करिबा then we will practice some MCQ प्रति क्लास रे हमें 5टा रु 7टा MCQ करिबा ओके 5 to 7 मिनिमम 5 मैक्सिमम 7 की 10 पान दिबो तो 7 हेले into 40 280 टा हमर MCQ डिस्कशन होबो and along with that every day 1 PYQ गोटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम द इकोनॉमिक सेक्शन और फ्रॉम एग्रीकल्चर we will discuss जोटा कि मेंस हो so in this way you will get 40 PYQ covered so class सरला पर माने क्लास सरया आगु you will have the complete notes complete knowledge about all of this Indian economy जोटा कि तमे एग्जाम रे पढ़े रे कोन कर परिबो ठीक just 1 minute चलो तो कल क्लास रे हमें पढ़िबा तापरे एटा हम डिस्कशन करिबा तो टुडे वी हैव lack of some time so I made it रखबा thanks for watching the lecture
Have a good day.